हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आप लोग फेमिलियर हैं स्टेट से। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हर स्टेट की बताइए जिसमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ स्पेसिफिकली उस स्टेट की हो और किसी दूसरी स्टेट में एग्जिस्ट ना करती हो। सोच सकते हैं, तीन ही स्टेट्स है ना आपके पास, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो अगर मैं आप लोगों से एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हर स्टेट में होती गैसेस, कुछ कुछ मतलब वो प्रॉपर्टी जो किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट करती हो और वो दूसरी और स्टेट में ना हो। देखें ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोपिकली किसी भी स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं अबाउट पार्टिकल्स जो आप बता रहे हैं। ठीक है, बट मैं मैक्रोस्कोपिक यानी कि एक जनरल प्रॉपर्टी कह रहा हूँ जो कि आप जो है उसको देख के बता सकते हो। ऐसी कोई सी एक प्रॉपर्टी किसी भी एक स्टेट की जो सॉलिड है, इट कैन नॉट बी कोल्ड, फिक्स शेप होता है। वेरी गुड। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, फिक्स वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड्स का भी होता है और लिक्विड्स का भी तो फिक्स वॉल्यूम होता है। तो कॉमन हो गई ना प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी। बट जिस तरह इन्होंने बोला फिक्स शेप, तो फिक्स शेप सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही है। फिक्स शेप लिक्विड्स पे भी अप्लाई नहीं होती और फिक्स शेप गैसेस पे भी अप्लाई नहीं होती। बट अगर हम फिक्स वॉल्यूम की बात करते हैं तो फिक्स्ड वॉल्यूम हमारे पास सॉलिड्स का भी होता है और लिक्विड्स का भी होता है, राइट? पोर कर सकते हैं इसको, और स्पेसिफिक या और एप्रोप्रिएट वे में क्या बोलेंगे? बट ये प्रॉपर्टी हुई, मतलब इसको और स्पेसिफाई करो। आप बात सही कर रहे हो, अगर इसको फर्दर स्पेसिफाई करो। अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो जैसे कि इन्होंने बोला सॉलिड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, लिक्विड्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी सोचिए जो सिर्फ लिक्विड्स में हो और किसी और में ना हो। तो जिस तरह आप कह रहे हैं पोर कर सकते हैं, बात सही है, मगर पोर करना प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसको और स्पेसिफाई करो कि क्या बोल, क्या एक्चुअली क्या चीज है जिसकी वजह से वो पोर हो सकता है। जी आप लोग भी सोचिए। योर गुड नेम, आपका गुड नेम? सोनिया। योर्स? मनाहिल एंड अरहम। ओके, तो पोर क्यों होता है लिक्विड? बिकॉज लिक्विड फ्लोस। ठीक है, तो लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी हो गई कि लिक्विड क्या करते हैं? नहीं देखो, बात सेम होगी। मैंने कहा कि तुम बात गलत नहीं कह रहे, मैंने तुम्हें यही बात बोली थी, मगर मैंने कहा था कि उसको और स्पेसिफिक वे में या एप्रोप्रिएट वे में बताओ। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बोली कि तुमने बात गलत की है। ठीक है, लिक्विड में जब गैसेस हैं, मतलब थोड़ी स्पेसेस होती हैं। हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। लिक्विड्स कंप्रेस इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जो स्पेसेस हैं वो उसमें पार्टिकल्स की इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, किसी ना किसी तरफ से मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ टच हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फार अपार्ट हो के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टच ही ना हो रहा। सॉलिड्स में भी टच हो रहे होते हैं और लिक्विड्स में भी टच हो रहे होते हैं। गैस की क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कि गैस कंप्रेस हो जाती है। गैस कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो गैस की क्या प्रॉपर्टी है? गैस इज कंप्रेसिबल।
ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज जी। और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि हम उनको देख के इन प्रॉपर्टीज को फिगर आउट कर सकते हैं, हमें उन्हें माइक्रोस्कोपिकली स्टडी नहीं करना पड़ता। ये बात क्लियर है? यस खतीजा, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? यस सर। है जो कि हम उसको स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो प्रॉपर्टीज बताएं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक वो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास जो देखें इन 3 स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स एग्जामिनर अक्सर पूछता है वो बेसिकली क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, और वो स्ट्रक्चर के बारे में 3 चीजें पूछता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 चीजें क्या क्या है कि जब भी आप किसी भी स्टेट को स्टेट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, तो एक आप बात करेंगे पार्टिकल्स की सेपरेशन की, कि पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर हैं, फार अपार्ट हैं, किस तरह पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे, और थर्ड हम बात करेंगे पार्टिकल्स के मोशन पे। तो जब भी एग्जामिनर आपसे इन तीनों में से किसी भी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए कहे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, तो आप ये 3 ट्रेड्स या ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे ईच स्टेट के। ये बात क्लियर है सबको? यस। सो इन तीनों की बेसिस पे ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहलाती है, कि हम पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जो अभी आप लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड्स, तो अगर हम पार्टिकल सेपरेशन की बात करें तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज टुगेदर। क्लोजली पैक्ड टुगेदर, टाइटली पैक्ड टुगेदर। ठीक है, सो पार्टिकल्स आर closely and tightly packed together। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम क्या बताएंगे पार्टिकल सेपरेशन के बाद? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट होती है सॉलिड में? रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है। जब हम देखते हैं तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली अरेंज हुए हुए होते हैं ना, एक स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं। तो सेकंड ट्रेट इज रेगुलर अरेंजमेंट, और इस रेगुलर अरेंजमेंट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। जी, आप में से किसी को पता है क्या टर्म होती है वो? पैटर्न। लैटिस। जहां पे भी स्ट्रक्चर लैटिस की टर्म यूज हो रही हो, इसका मतलब है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। ये बात समझ में आ रही है?
कोई कंफ्यूजन है? ओके। और थर्ड हमने क्या डिस्कस करना है? मोशन। तो पार्टिकल्स क्या किस तरह मूव करते हैं, क्या मोशन होता है? They vibrate in a fixed position. वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। सो पार्टिकल्स वाइब्रेट about their mean position। जी। सॉलिड सबको क्लियर है? मनाहिल आपको भी? ओके। खतीजा आपको? Yes, sir. Clear. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स सेपरेशन क्या होती है? देखिए लिक्विड अब टॉप की तरफ ज्यादा लूज होते हैं और डाउन जो बॉटम होता है मगर सॉलिड जैसे तो नहीं होते। अच्छा, अगर हम लिक्विड में पार्टिकल्स देखें तो वो सॉलिड जैसे भी नहीं होते और गैस जैसे भी नहीं होते। गैस के लिए हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट, बीच में होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट है ना। तो जब भी हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बताएंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम रिलेटिव बात करें, यानी कि हम उसे इधर कंपैरेटिव टू सॉलिड बताएं और इधर हम कंपैरेटिव टू गैस बताएं। अगर मैं कंपैरेटिव टू सॉलिड बोलूंगा तो मैं किस तरह स्टेट करूंगा कि पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड्स, ठीक है। जब मैं गैस से रिलेट करते हुए बात करूंगा तो पार्टिकल्स आर फार बट नॉट एज फार एज इन गैसेस, ठीक है। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वे है बताने का, ठीक है। तो पार्टिकल सेपरेशन जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड, ठीक है। अरेंजमेंट कैसी होती है? Sliding over each other. नहीं, दैट इज मूवमेंट। इरेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट किसमें होती है? सॉलिड्स में होती है, ठीक है। इरेगुलर अरेंजमेंट, और इरेगुलर अरेंजमेंट होगी तो हम वहां पे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए लैटिस की टर्म यूज नहीं कर सकते। लैटिस की टर्म हमेशा कब यूज होगी? जब रेगुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। अब आ जाए मूवमेंट पे। तो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? दे To and स्लाइड fro. पास्ट ईच अदर, स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है। फ्लो करते हैं, स्लाइड पास्ट ईच अदर। सो मूवमेंट वुड बी पार्टिकल्स slide past each other। Next state is gas. So how the particles are separated? They are far apart. They are far apart. Very good. Particles are, and if I say furthest apart, then it is also correct because gas is the state in which the particles have a maximum distance between each other, right?
arrangement, irregular arrangement, now movement. What is how they move? Like a bouncing ball, they collide. They collide while moving. So they actually move freely, and in gases the particles uh, spread, right? They spread out. So we can write that particles move randomly, freely, and spread out. Is it clear? Yes, Sonia? Khadija? Yes, sir. Clear. Okay. If you guys have noted down, shall I proceed? Have you noted down, Sonia? Okay. Next subtopic here we have is change of state. So what change of state we will observe? What are, yes? Freezing, good. Melting, boiling, evaporation, sublimation, Condensation. yeah, condensation. So there are 5 changes of state: freezing and melting, boiling, evaporation, and condensation. Freezing, melting, boiling, evaporation, condensation, and sorry, sublimation as well. Transpiration is the movement; it's not the change of state. Yeah. So, for example, we have solid. It turns into liquid, and liquid turns into gas. So, turning of solid into liquid is melting. Turning of liquid back into solid is freezing. Turning of gas into liquid is condensation. And turning of liquid into gas is evaporation and boiling. So there can be 2 types of state changes. And one, when solid directly turns into gas, that is called sublimation. Petrol is a liquid. Dry ice, very good. Iodine do sublimation. Dry ice do sublimation. Beside naphthalene balls do sublimation.
So if I ask you what is melting point, how can you state this? The exact point in which solid starts. It is a temperature, a specific temperature where solid melts. Okay, and what is a freezing point? A temperature where liquid freezes, right? What is the difference between melting point and the freezing point? Are they a same temperature or Different. different? How different? It's same temperature. No, melting point and freezing point is always same temperature. The only difference is that when we are start from solid, then we consider that temperature as a melting point because that solid starts to melt at that temperature. But when we start from liquid and try to cool it, at the same temperature it starts to freeze, so it becomes a freezing point. So that is the same temperature, but it depends from which state we are starting, from which state we are changing. So temperature at which solid melts. Then next we have freezing point. Khatija, is it clear to you that how they both are same temperature? Yes, sir. A temperature at which liquid freezes Hmm. 1 minute. Both melting point and freezing point is same temperature. You have to remember this point. Most of the time student got confused that they are different temperature. Okay. Next we have boiling point. A temperature at which yeah, sorry, at which liquid boils. And what is a condensation point? Gas condenses or gas turns into liquid. And when I say gas condenses, it means gas to liquid. Yes, is this clear to everyone? Yes. Okay. Now, if I ask you, we have seen evaporation is also when a gas turns into liquid, when a liquid turns into gas, and boiling is also the same when a liquid turns into a gas. So what is the difference between?
Yes. Yes, Sonat, what you are saying? Can you repeat? Boiling throughout the liquid. Very good. Is very high जाती है. Evaporation. और कोई difference? Boiling Yes. fixed temperature पर होती है और throughout the liquid होती है और evaporation on top of the surface और किसी भी temperature पर हो सकती है like at room temperature भी evaporate हो सकती है. Okay. Yes, Khatija, what you were saying? So I was saying in melting, in boiling, there's an exact temperature at which liquid starts to boil, but evaporation can also be done at room temperature. It not requires a specific temperature. Okay, that's good. And the other difference, as Sun said, boiling occurs throughout the whole liquid. All particles evaporate. Yeah, but in liquid, in evaporation, only those particles which are at surface have enough energy to escape the liquid state. So the first difference is boiling occurs at the boiling point, the temperature where the substance, where that liquid boils, at the boiling point of liquid. And when we talk about evaporation, so evaporation occurs at any temperature below its boiling point. Boiling occurs throughout the liquid. Evaporation occurs at surface only. Molecules or particles at surface have enough energy to escape liquid state, because it's below boiling point, so every particle of that liquid doesn't have that much energy. Only few particles which are at the surface have that much energy, so they can escape the liquid phase. Yes, is this clear? Okay. Then we have a sublimation point. So it is the temperature where sublimation occurs, where solid sublimes.
So those substances which sublimes, do they have a liquid state? No, they don't have any liquid state, okay? Yes, Sonit, is it clear? Manahil? Arham? If you have any confusion, do ask. Okay. Khatija, is it clear to you as well? Yes, sir. I want to confirm one thing that condensation and boiling also have a same temperature. Yeah. Yes. So you Okay. can write over here that boiling point and condensation point are same temperature. Okay, everybody noted down till here? So, yes, Sonit? Yes. Manahil, are you done? Okay. Okay, Khatija. Now, note down this point that solids which sublimes do not have any liquid state. Yes, is this clear? Yes. Okay. Now, we all know that melting is when a solid turns into liquid. But if I ask you how melting occurs, what are the events that took place during the melting? Particles gain heat energy. On heating, yes, particles gain energy. Which particles? Solid particles. We heat the solid. So what happened next? Hydrate करना होनी वो मतलब they if we talk about solid, yeah, they already vibrating, right? But due to by gaining their energy, the particles start to vibrate more faster, and as a result, what will happen? No, they not yet break up. The solid expands. The solid expands. So what are the events? Solid to vibrate more faster. If you write they start to vibrate, it is considered as wrong. Why? Because the particles in solid always under vibration. But by gaining energy, their vibration becomes more faster, which leads to the expansion of a solid till the melting point reaches. And at the melting point, the particles in solid have enough energy to break from their positions and turns into liquid. So this is how you have to, if the examiner asks you about how the melting is taking place, so you have to write these series of events. Is it understandable? Okay, let's write.
Sania, is it clear or to you, Khatija? Yes, sir. Okay. On heating solid, particles gain energy and vibrate more faster. As a result, solid expands. So this vibration become faster and faster, and solid start to expand more and more until the melting point reaches. So at melting point, particles have enough energy to break away from their positions and solid turns into liquid. Is this clear? Yes. Yes. In the same way, you have to know how boiling occurs, what series of events took place during boiling. The voice mainly like taking Yeah, melting it compared. no, but there is a difference over here. In solid particles do not vibrate. Oh, sorry, in liquid particles do not vibrate. So the particles start to slide past each other and move more frequent and here the particles bump into each other and bounce back. That's how the liquid particles are moving. So everybody is done. Okay. So is it clear? Now my voice is clear now. Yes, sir. Now clear. On some